जिस तरह से व्याकरण शास्त्र ने, जिसको फिलोलॉजी कहते हैं, या भाषा शास्त्र ने कैसे लैंग्वेज को नियंत्रित किया, कंट्रोल किया, इस पर हम लोग 2 दिन चर्चा किए। 2 बार मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच बोल चुका हूँ। इस बीच में मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई नई बात लेकर आप लोगों के सामने आया, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूँगा कि भाषा और व्याकरण, इन दोनों का संबंध दोनों के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। कौन पहले कौन बाद में, इसे लेकर के एक विवाद होता रहा। हमारी जितनी भी क्लासिक लैंग्वेजेस हैं, उन क्लासिक लैंग्वेजेस में व्याकरण, ग्रामर एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में है, रहा है, रहेगा। मातृभाषा में, मदर टंग जिसको आप कहते हैं, उसमें व्याकरण की स्थिति बिल्कुल दूसरी होती है। जो पैटर्न प्रैक्टिस होती है या सुनते सुनते जो हम सीख लेते हैं, उससे ग्रामर का काफी अंश हम समझ जाते हैं बिना यह जाने हुए कि यह ग्रामर है। मैं एक उदाहरण दूं और कभी जाकर के आप लोग इसे कोशिश करिएगा कि अपने घर के एक छोटे से बच्चे को जो भाषा समझने लगा हो, मातृभाषा समझने लगा हो, उससे कहिएगा कि घोड़ा आ रही है या गाय आ रहा है, आदमी जा रही है, देखिए वो तुरंत आपको टोक देगा और आपको करेक्ट कर देगा। ग्रामर नहीं पढ़ा है उसने, व्याकरण नहीं पढ़ा है, लेकिन जो बोलचाल की भाषा है, बोलचाल की भाषा बिना व्याकरण के भी समझ में आ जाए तो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जब भाषा के हम संस्कारित स्वरूप की ओर बढ़ने लगे हैं, उसके उस स्ट्रक्चर की तरफ जाने लगते हैं जहां पर कि उसका परिमार्जन हुआ है, तो हमें व्याकरण की जरूरत पड़ती है। और यह कार्य भारतीय भाषाओं के मूल में जिसको विद्यमान माना जाता है, मौजूद माना जाता है, संस्कृत में। और मुझे ये लगता है कि संस्कृत के समानांतर या संस्कृत के बाद हमारे संस्कृत के विद्वान लोग बैठे हुए हैं, बताएंगे इसे कि तमिल में बहुत मजबूती के साथ हुआ है। एक बात मैंने कल भी कही थी, आज भी मैं उसे दोहराना चाहूंगा कि आज व्याकरण जिस तरह से केवल भाषा के साथ या भाषा के संस्कार के साथ या भाषा के रिवीजन के साथ जुड़ा हुआ है, क्या अपने शुरुआती स्वरूप में यह केवल भाषा के साथ से जुड़ा हुआ था, या भाषा से अलग जीवन से भी इसका कोई संबंध था? बात बड़ी अजीब लग सकती है कि व्याकरण और जीवन, इन दोनों में क्या संबंध है, लेकिन रजनी जी बैठे हैं, शायद इस पर कुछ बात करें कि अष्टाध्यायी और तोलकप्पियम दोनों में एक बड़ा खंड विषय से संदर्भित है, जो भाषा से नहीं, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन की परिघटनाओं से जुड़ा हुआ है, रोजमर्रा में हम क्या कर रहे हैं, इन सब से जुड़ा हुआ है। तो इन सब को देखते हुए अगर हम बात करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि व्याकरण केवल भाषा के साथ नहीं, बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा है और ये पूरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यह हमारी कमजोरी है कि व्याकरण को हम सीमित करते गए, और सीमित करते करते इसे केवल भाषा शास्त्र के रूप में बना करके हम व्याकरण पर विचार करते रहे, या व्याकरण से बहुत आगे बढ़े तो काव्य शास्त्र पर चले गए, पोएटिक्स पर। लेकिन इन सबके बीच में हमारा जीवन कहाँ छूट गया, या जीवन की समस्याएं कहाँ थी,
जहां तक मुझे याद आ रहा है कि अष्टाध्यायी को देखते हुए, अष्टाध्यायी को पढ़ते हुए 8 प्रकार के विवाहों से भी आप परिचित हो जाएंगे कि विवाह के कितने प्रकार होते थे। तो ये जो हमारे जीवन में और जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, प्रोफेसर दामोदरन ने तोलकप्पियम का अनुवाद करा करके हिंदी में हमारे सामने रख करके एक बड़ा काम किया है। मित्रों, जो कल भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं कि तोलकप्पियम का अनुवाद आचार्य काशीनाथ ने भी किया था और नेशनल बुक ट्रस्ट से छपा था, लेकिन पता नहीं क्यों उस रचना पर न कोई बात हो पाई, न कोई ध्यान दे पाया लोग, और न तो हम लोग उसे देखे हैं कि उसे किस रूप में और कैसे किया गया है। प्रोफेसर दामोदरन ने जो अनुवाद किया उसमें मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि मूल पाठ के साथ साथ उसका हिंदी वर्जन, फिर उसका ट्रांसलेशन, ये 3 प्रक्रियाएं मिल करके हमें कहीं न कहीं मूल रचना के साथ जुड़ने का अवसर देती है। हम समझ सके अगर कुछ तो जो लिप्यंतरण है, ट्रांसक्रिप्शन है, उसके माध्यम से भी है। अगर हमें अनुवाद में कहीं कोई समस्या हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है समझने में, तो उसको ट्रांसक्रिप्शन हमें समझने में मदद करेगा। यह एक बड़ा काम है और मैं इसके लिए दामोदरन को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। एक और चीज, इन 2 दिनों के बीच ये भी कुछ और बड़े काम हुए हैं। अनुवाद का काम, तोलकप्पियम का काम, इन सबका तो हुआ ही। आपने जो किताबें 4 रिलीज की उसमें से 3 ऐसी हैं जिन पर मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा। भारतीय भाषा केंद्र में तमिल चेयर की स्थापना और तमिल चेयर का स्ट्रीम में बदल जाना, और आज हम जिस तरह से तमिल भाषा के व्याकरण पर बात करते रहे हैं, यह एक लंबे सफर को तय करने के बाद हमें अवसर मिला है, हम इसी स्थिति में पहुंच पाए हैं। और इन सारी स्थितियों को, इन सारी घटनाओं को तिथिवार, डेट वाइज एक क्रम में नियोजित करके एक तरह से भारतीय भाषा केंद्र में तमिल साहित्य के विकास का इतिहास भी दामोदरन ने दिया है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, किसी भाषा केंद्र में जब कोई स्ट्रीम, कोई लैंग्वेज शुरू होती है तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उस लैंग्वेज का विस्तार कितना हो रहा है, कितना वो अपने को एक्सटेंड कर पा रही है, कितना और भाषाओं के साथ घुल मिल पा रही है। हमें खुशी है कि हमारे तमिल स्ट्रीम ने जितना शोध का कार्य किया और तमिल के साथ साथ जितना भारतीय और विदेशी भाषाओं को उन्होंने जोड़ा, और इन सब के साथ हमारे तमिल छात्रों ने जिस तरह से रचनाओं का अनुवाद किया और उन रचनाओं को, लेखों को, उनके निबंधों को 2 वॉल्यूम में शायद आपने प्रस्तुत किया है। ये 2 वॉल्यूम जो तमिल के हैं, ये हमारे सेंटर के छात्रों और अध्यापकों द्वारा किए गए कार्यों का दस्तावेज है। मैं उस दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण के लिए भी दामोदरन को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग 2 दिन तक तमाम बारीकियों पर बात करते रहे, व्याकरण की बारीकियों पर बात करते रहे, व्याकरण के संबंध को समझने की, व्याकरण और भाषा के संबंध को और व्याकरण और जीवन के संबंध को यह समझने की कोशिश करते रहे। तमाम निष्कर्षों पर हम पहुंचे हैं। मुझे कल प्रोफेसर सुजाता का, देवशंकर नवीन का, आशिक मजार का कुछ ऐसे व्याख्यान थे जो मुझे सुनने का अवसर मिला था, और इनके माध्यम से जो मैंने देखा था कि किस तरह से तुलनात्मक ढंग से, तुलनात्मक दृष्टि से
तमिल और संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया गया है। आज प्रोफेसर रजनीश जी बोल रहे थे, मैं पूरा सुन नहीं पाया, आधा ही सुन पाया हूँ, लेकिन उस आधे से ही मुझे तोष हुआ है। आपने एक अवसर दिया, प्रोफेसर दामोदरन ने भारतीय भाषा केंद्र में तमिल साहित्य के तमिल व्याकरण पर बातचीत करने की प्रक्रिया की शुरुआत की और उसके माध्यम से कुछ निष्कर्ष निकाल पाए। इसका श्रेय प्रोफेसर दामोदरन को तो है ही, थोड़ा सा श्रेय भारतीय भाषा केंद्र को भी दीजिएगा। और भी कुछ गंभीर बातें मेरे और विद्वान लोग करेंगे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। Thank you, sir. I now kindly request Professor Dhananjay Singh, Professor and Chairperson of the Center for English Studies and Associate Dean of School of Language, Literature and Cultural Studies, to deliver their felicitation address. I'm so sorry. Sorry. Thank you so much, Professor Prakash Singh, Chairperson, Center for Indian Languages, Professor NEHRU, CIF, very dear friend, Professor Adish Mishra, Professor Kush Mishra, and of course Professor Ramthan, Professor Ramchandran, Professor Gopalram, my dear friends, colleagues, elders. It's a huge opportunity for me. Thank you so much, Professor Damodar. You're so humble. There's so much to learn from you in various ways. This is one occasion, since yesterday I feel that usually when we think of Tamil and Hindi, in a different context. But if academic scholarship can bring the two language literatures together, it's a wonderful experience. So thank you so much. And as far as, I'm so sorry, I'm just, as far as the translation is concerned, it's a huge event, a huge achievement for students and scholars of Hindi and those who read Hindi to be introduced, not only introduced, but to be, in a sense, led into the world of ancient Tamil culture, rich Tamil culture. One of the major sources of what is termed as Indian civilization or Indic civilization, there's so many sources, to primary being in Sanskrit and Tamil, and especially for us who are on this side of the country, the north side of the country, it's very essential for us to know and learn Tamil texts. Historically, I'm not somebody who is an expert in the field, but from whatever little I know, historically great movements, of course, social, political, historical movements, often with literary movements, obviously, with literature. This Tamil culture and society has so much to offer, something that we in this part of the world are not acquainted with. I also remember at this point of time and felicitate the two translators, of course, Subramanian, Professor H. Subramanian and Professor Nachimuttu. Obviously, Professor Nachimuttu, I had an opportunity to meet him personally. In fact, I had offered a course on Indian poetics for MPhil students around 2012-13 at that time, and I also requested him to come to the class, and he came to the class and delivered some, because I thought that Indian poetics can not only be Sanskrit, has to be Tamil. So he came to my class and gave some lectures. Also he gifted to me an English translation of TOLKÄPPIYAM. So that's such a humble and great scholar that he is. So I'll just take this opportunity to talk very briefly, because there are other scholars more expert in the field,
on TOLKΑPPIYAM, and as Professor Singh was just mentioning, language and its relation with society is not simply in terms of grammar being made of rules, basically, grammar being actually presenting rules of how to use a language, but grammar in a way is intrinsic to the way people and societies have thought, have cognized realities, traditions, memories. Even Ashtadhyayi, as an English you would know better than me, Ashtadhyayi is a grammar of human cognition, is a model of how to cognize different moments and structures of human reality. TOLKAPPIYAM, of course, has a similar value. TOLKAPPIYAM is also very spatial, and it's very relevant today because, as all of you are better scholars, you know that it has three major sections, and the three major sections of the TOLKAPPIYAM suggest some sort of an equilibrium of the relation between language and reality, language and culture, phonetics, phonology, morphology, syntax, to poetics, obviously. For me, especially somebody who works in literary studies, the single most singular, there are many great contributions and its lineage, of course, that TOLKAPPIYAM offers. One that for me stands out is what we generally understand as the Akam and Puram categories. Any culture, any literary culture, or a culture with a history of intellectual tradition is known by the concepts and categories of reality, of culture, of history that it creates. In contemporary times, when we are thinking about this crisis of global warming, of climate crisis, a tradition, a text that introduces the inseparable relationship between the human and the environmental, the interior and the exterior, right? The interior and the exterior. Motul Purai, I mean, I'm sure that, I'm sorry if I'm not pronouncing it correctly, right? Motul, Karo, Uri Porul, I don't know if I'm pronouncing correctly. The connection between human feelings, like love, for instance, and to say that this universal human feeling, which is love, is distinctive in terms of where you love. So if you're experiencing love in the hills, if you experience love in the wetland, right, in the agricultural land, if you're experiencing love on the seashore, and if you're experiencing love in the desert, for instance, the experience, the articulation and the communication and the power of communication in linguistic term of love will be different. It's a wonderful, not only wonderful, I mean wonderful is an abstract word that I'm using, but it's real and it is continued. It is continued, right? The division between, not division as such, but to understand the structural nuances of human feeling and cultural feeling, all that happens in the interior world of human self, and how is that related to the exterior world of human self. That is something which is so cogently and so clearly and so universally presented in TOLKAPPIYAM. That's something that's wonderful. So I mean, I've just the brief time I could just thank you so much, Professor Damodaran. I'm a huge fan of you because you're so humble, and so knowledgeable, and so thank you so much for this opportunity, and congratulations to your center, sir, Center of Indian Languages, and thank you indeed. Thank you, sir, for your words. Now I request Professor Sushant Misra, Chairperson of Center of French and Francophone Studies, to speak some words.
me it is a unique opportunity. Well, I'm speaking English in English because so all participants demanded that. Otherwise, English is a foreign tongue for me, more foreign than French. Though of course I know that English is Indian because of a certain definition in the census of India. But for me, that's all I'm saying. Yes. So, but it is okay. Being in academia, one learns to talk in English and understand English and breathe in English and maybe sleep in English. And especially in this context of TOLKΑPPIYAM, that is very important for me. So that's why I referred to it. Because of course I had read about TOLKΑPPIYAM, several texts here and there, but my first introduction, actual introduction to the text is through my students, whom I attempted to teach TOLKΑPPIYAM back in 2003, when I was suddenly asked, a teacher of French was asked to offer a course of translation studies, which was considered to be a specialization course that time for the students of MA in English. And very interestingly, the non-teaching staff had objected to me being allowed to teach this. That's the university system. That yes, because the non-teaching means, they're not wrong, they're correct as per UGC norms. Because according to them, I was an assistant professor of French. How can I be asked to teach a course in the Department of English? But somehow that was defended. And my students started teaching me TOLKAPPIYAM. When I started to read with them the issues of stylistics, because when we start actually, since I was from French, so we started from sociology. And the sociologian dilemma in the modern world is that he was a teacher of Sanskrit who was asked to teach linguistics. So after that you can see that we have got a great tradition. So some of my students are doing great in their field. They are definitely teaching this text also. So that was my first introduction, and since then I have not stopped because I have been discovering the text. Even today in some of our courses, some of my colleagues discuss, and we all discuss works of, let us say, Derrida. Derrida is often, if I may be allowed to use the Hindi word, Dharavna. So Derrida is the Dharavna, the fearful scholarship of the European tradition. But that is a great scholarship, no doubt about it. So, but look at the text that he has written of grammatology, which is his PhD thesis basically. So when you look at the text grammatology, literally grammatology is a study of speech, of the writing systems. Literally, that's what it is. And in the Western tradition, they went from speech and writing and tried to establish a relationship between that. So in that process, for last 120 years, we find a lot of texts on stylistics called Sll&Cs in Hindi, stylistics. So this text is a very important text, part of which was read by Professor Rajneesh today. But not only that, if you go to many, I don't remember the details because it has been a few years that I taught and my students taught me actually. But for understanding the stylistic features of language, whether you talk in terms of grammeans, that means in terms of the written word or in terms of a spoken word, this is a very important text among many others. And you have a full tradition of that. And in fact, whenever I started it, because today I've heard that the relationship between Tamil and Sanskrit and Prakrit, in the first session also people talked about it. Somewhere I felt that we cannot actually say, you cannot study totally a holistic way, neither the Tamil tradition without Sanskrit nor the Sanskrit tradition without the Tamil and such other traditions.
all that happens in India. So the Indian tradition is a kind of a wired instrument that you cannot play a sitar or a guitar just by touching one wire of it. If you have to play it, you have to play it touching all the wires and in totality. And TOLKÄPPIYAM represents for me that kind of text and that kind of a scholarship. I will not go into the details because this is not the moment. And of course I know that I'm in the Indian terminology, I'm an Atithi Vakta, from Atithi Shrota to Atithi Vakta, from a guest listener to a guest speaker. So my status has changed, so I won't go into the detail. I will keep myself within the time limit. And I won't stand in the way to the keynote speech. So by Professor Rajneesh, it is always a pleasure to listen to him. He has been a great friend, philosopher and guide for me since my student days. So I would now stop just by saying that this is one text which should be understood in the contemporary traditions of understanding the phonetics as well as the written features when we